Hello guys, welcome back to the TI lectures. In this lecture, we'll be discussing about the vaccines against the COVID-19. So we'll see first what is vaccine. A vaccine is a kind of biological preparation that provides a kind of active acquired immunity. Active acquired immunity. If you remember, the thing I already mentioned in my previous video lecture, if you have not seen that very lecture, the link is given in the description. You can watch that very video. So this vaccine, it is a biological preparation. It provides active acquired immunity to a particular infectious disease, right? The administration of vaccine, the injection of vaccines is called as vaccination. Vaccination is the most effective method of preventing infectious diseases as provided by the worldwide eradication, as proved. When we say that this vaccination is the most effective method in preventing infectious diseases, because it has been proved by the worldwide eradication of the smallpox, by restriction of some dreadful diseases like polio, like measles and tetanus from much of the world. Vaccination is the safest and the most common way to gain immunity against a particular virus or against a particular bacteria or against any kind of pathogen that our body has yet to encounter, right? Vaccines contain a harmless form of the bacteria or harmless form of the virus that causes the disease we are being immunized against. You got my point? The bacteria or virus will be killed first, or will be greatly weakened, or will be broken down. These are the different means and methods to form a vaccine. We'll see later here that the bacteria or virus will be first killed, or it will be greatly weakened, or maybe genetically crippled or broken down into small pieces or fragments before use in the vaccine, so that they can activate, they can trigger our immune system without making us sick. Our immune system will still attack the harmless form of the bacteria or harmless form of the virus and will produce antibodies to fight it off. The immune system then keeps a memory of the disease. So if a vaccinated person encounters that disease years later, at that time the immune system will ready to fight it off and prevent an infection from developing. So this is the beauty of the vaccination. So we'll see how vaccines are formed. Vaccine, there are different approaches by which the vaccines are formed. बहुत तरीकों से वैक्सीन को बनाया जाता है. For example, we say that vaccines typically contain either dead organism or inactivated organism or purified products derived from that organism. You got my point? So particularly there are three main approaches to making a vaccine. We'll see those approaches one by one. First approach number one, approach 1. In approach 1, the whole virus is being used. इस अप्रोच में क्या किया जाता है, पूरे वायरस को लिया जाता है. दो तरीकों से इस अप्रोच 1 को यूज किया जाता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वैसे पूरे वायरस को लिया जाता है या उस वायरस को लाइव लिया जाता है, जिंदा रखते हैं, बट उसको इतना कमज़ोर किया जाता है, वीकन किया जाता है, एटेन्यूएट किया जाता है, सो दैट जो उसमें डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी है, उस डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी को बहुत कमज़ोर किया जाता है, सो दैट मे नॉट कॉज डिजीज़ इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. For example, we have in hand such kind of vaccines, like we have measles vaccine, we have MMR vaccines. The vaccines currently used for measles disease और the vaccines, MMR vaccines, उनको कैसे बनाया जाता है? उनको अप्रोच 1 के तरीके से बनाया जाता है.
यू गॉट माई पॉइंट। इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में क्या किया जाता है, होल ऑर्गेनिज्म इज टेकन, होल ऑर्गेनिज्म इज टेकन, पूरे ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है, दैट मीन्स पूरे वायरस को लिया जाता है। देन या उस वायरस को इतना कमज़ोर किया जाता है, इतना वीकन किया जाता है कि उसमें जो डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी है, उस डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी को बहुत कमज़ोर किया जाता है, सो दैट दिस वायरस में नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ डिजीज़ इनटू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसमें इंजेक्ट किया जाता है। दूसरा तरीका इसी अप्रोच 1 में, दूसरा तरीका ये है, सेकेंड वन, दैट उस पूरे वायरस को लिया जाता है लेकिन उस पूरे वायरस को किल किया जाता है, दैट्स बीइंग किल्ड, उस पूरे वायरस को किल किया जाता है। You got my point? So we have in hand such kind of vaccines, like we have the vaccines for rabies. You got my point? We have vaccines for polio. जो वैक्सीन रैबीज़ के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, जो वैक्सीन पोलियो के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, वो वाले वैक्सीन, उन वैक्सीन्स में होल ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को पहले से किल किया जाता है। और जो वैक्सीन मीजल्स के लिए यूज़ होता है, उस वैक्सीन में भी पूरा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है लेकिन वो ऑर्गेनिज्म लाइव होता है, लेकिन उसमें जो डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी है, उस डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी को बहुत कमज़ोर किया जाता है। Got it? We'll see now the second approach. Approach second. Approach second. Approach second में क्या किया जाता है? Some part of the virus is taken and that part trigger or activate our immune system. You got my point? मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, एक दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ए वायरस। इसमें कुछ प्रोटीन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द आउटर सरफेस, कुछ ये वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, राइट, कुछ इनर वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। यू गॉट माई पॉइंट। अप्रोच सेकंड में क्या किया जाता है, सम पार्ट ऑफ द वायरस इज टेकन, ये पार्ट कोई भी पार्ट हो सकता है, आइदर द पार्ट ऑफ दिस वेरी जेनेटिक मटेरियल, आइदर द पार्ट ऑफ दिस पार्ट विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस, कोई भी पार्ट, उसको इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में, एंड जो हमारी बॉडी है दैट रिकॉग्नाइजेज इज एज ए हार्मफुल, ए फॉरेन सब्सटेंस एंड ट्रिगर्स एंड माउंट्स एन इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। और हमारे पास जो अभी वैक्सीन अप्रोच सेकंड से तैयार किया गया है, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव द वैक्सीन अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी, राइट, जो वैक्सीन अभी यूज़ हो रहा है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, उस वैक्सीन को अप्रोच सेकेंड मेथड से तैयार किया गया है। दैट मीन्स उस अप्रोच में पार्ट ऑफ द वायरस को लिया गया है और उस पार्ट को वैक्सीन बनाया गया है, देन दैट हैज़ बीन इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द जो भी डिजीज ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें हेपेटाइटिस होगा, उसको इंजेक्ट किया जाता है, राइट। नाउ विल सी द थर्ड इंपॉर्टेंट अप्रोच, अप्रोच थर्ड। अप्रोच थर्ड में क्या किया जाता है, अप्रोच थर्ड में जो दिस पोर्शन राइट हियर, दिस कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड, दिस कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। अप्रोच थर्ड में न्यूक्लिक एसिड को लिया जाता है। दिस इज ए नोवेल टाइप ऑफ वैक्सीन फॉर्मेशन। गॉट माय पॉइंट? दैट मीन्स अप्रोच थर्ड से जो वैक्सीन तैयार किया जाता है, उस वैक्सीन में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। And we know when this vaccine is being injected into the body of the particular organism, particular individual, उस individual में उस vaccine को हमारी body जो है that will recognize it as a foreign and harmful substance and will trigger an important immune response. Right? So these are the different approaches by which the vaccine is being made. फर्स्ट वाला अप्रोच, उसमें क्या किया जाता है, पूरे ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है या उस ऑर्गेनिज्म को लाइव किया जाता है, दैट मीन उसको जिंदा रख के कमज़ोर किया जाता है, या उस ऑर्गेनिज्म को पूरा लेके किल करते हैं और देन उसको वैक्सीन बनाते हैं। सेकेंड अप्रोच में
फॉर एग्जाम्पल पार्ट ऑफ द वायरस को लिया जाता है, वो पार्ट कोई भी पार्ट वायरस का हो सकता है, क्योंकि वायरस में डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट होते हैं, लाइक आउटर पार्ट, लाइक इनर पार्ट, लाइक मिडल पार्ट, कोई भी पार्ट लिया जाता है, देन वैक्सीन बनाया जाता है। सेकंड जो किस में आता है, अप्रोच सेकंड में। और थर्ड अप्रोच में जो इनर जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है, उसको लेके वैक्सीन बनाते हैं, वो थर्ड अप्रोच में आता है। Got my point? So these are the different approaches by which vaccine is being made. Now we'll see how vaccines work, right? We saw earlier that whenever any kind of foreign substance or any kind of foreign pathogen invades our body, enters into our body, it is recognized as foreign one by our immune system. Got it? And is rendered inactive. Got my point? So when we get vaccinated, the organism or its part in the vaccine is recognized as a foreign harmful substance, and our body gets activated, and after activation it forms the type of cells I discussed earlier in the previous lecture, like memory B cells and the plasma cells. And after the formation of the memory B cells, what will happen? Memory B cells will recognize the agent in the vaccine and will prevent the vaccinated person from further attack in future. This here indicates, this means that if the same disease is encountered again, our system has memory of that very particular kind of disease, and our system will show the heightened state of immune response and will prevent that particular individual from that kind of virus or that kind of pathogen. Got my point? As I earlier mentioned, that the memory behavior, that is the beauty of our acquired immune system, that is the beauty of our adaptive immune system. And then it will form the plasma cells. Plasma cells will produce enormous number of antibodies, and those antibodies will try to help our immune system, or they will render that kind of pathogen inactive against our body. They will prevent our body from that particular kind of pathogen, right?